see in the papers, and you must have seen the papers, they have got a suo motu powers. And they may exercise suo motu power more frequently and more regularly. And So- they have power of direct inspection. Direct inspection also. So the question is that the honeymoon of the quality control board and Shahid is over. No, let me very frankly, that honeymoon is over. So the question is that you do something which you nobody. Standing committee के पास है यार. Not answerable to anyone. They're very frankly not answerable to anyone. Very frankly. So the question is that somebody is there which is independently nominated, elected, or whatever you can call it, not coming from the institute, is looking after the function of the quality assurance board. So this, huh? What will be the extent of their inspection? Extend, as I'm saying, if you read the law, What the powers they have? in the regular cases, that also there we have said that it should be on the recommendation of quality assurance board. But suo motu power is always there. They can come and do the suo motu action. If Shahid, am I correct? When suo motu power is there, they can directly review the papers of the person of any firm or whatever they are. हाँ, उसको भी हमने क्वालिफाई किया, उसको भी हमने जहाँ तक डाइल्यूट कर सकते हैं उस सो मोटो पावर को भी हमने डाइल्यूट करके रख दिया है टू द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन टू इंस्टीट्यूट. यस सर. सर वो उसमें आएगा. आप कुछ कहते हैं? I think one little observation. I think Japanese model. सर जापानीज दैट मीन असलान कोई जापानीज मॉडल नहीं है. ये मैं रिट्रेट कर रहा हूँ आपको. दे दो जापानीज मॉडल. Japanese model is highly criticized because of the recent scandals in Japan. So actually, if we may want to have a relook at the Japanese. देख लेंगे. वो तो एक अलग. दिवाएंगे देखेंगे. My question is not that. My question is, I think it's not working. Yeah. Either you वो भी कर देंगे. वो भी किया है. सही. Oversight board है. उसमें is there a power to impose penalties, fines, other than deregistration or registration? एब्सोल्युटली यही किया है. उसमें पेनल्टीज का प्रॉब्लम ये था अभी जो है ना इंस्टीट्यूट के पास एक्चुअली मेंबर्स को और इसमें हमारा क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क में यू आर एब्सोल्युटली राइट. You either your quality is satisfactory, and if it is not satisfactory, then you are gone. So and there is no penalty system, scaling and graduate. So that has been provided for in the law, that actually there is a penalty system and there can be fines, and it will be only in extreme situations that firm will be deregistered. So instead of the concept at the moment was satisfactory rating or not satisfactory rating. What about if the decisions of the oversight board, can it be challenged in the courts? Yes, the High Court. ऑब्वियसली हाई कोर्ट में तो हमारा जो लॉ है फंडामेंटल राइट्स का कोई भी लॉ अगर आप लिख भी देंगे इट कैन नॉट बी चैलेंज स्टिल दैट दे कैन बी चैलेंज्ड. सो वो तो हमारा जो सिस्टम है in my judgment lot of things should not be able to be I mean look at the council decisions. All the council decisions, disciplinary actions are challenged, and then the relief cut even in the most outrageous cases also. नहीं मैं आपका तो वो उसमें इसके साथ में कहता हूँ, for example, जी SCCP की बड़ी डिजायर थी कि उसका अपीलेट फोरम SCCP हो. They were very adamant on this matter, and we took a position. We said no. They were saying that our oversight board का जो appellate हो, that should be SCCP, and we said no. Appellate of the oversight will not be SCCP; it will be High Court. So we have given our power to the people who are in oversight to be answerable to the High Court, not to the. अल्ताफ साहब आपके मैंने सारे सवाल पढ़ लिए थे. मैं अभी मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं आप अगर शॉर्ट कर दें मेहरबानी होगी. ऐसा सब कंटिन्यू कर देंगे. आपने बड़ी इज्जत दी सर के मेरा नाम को दिल दिया. मैंने मैंने आपके साथ सवाल इसी पर गौर से पढ़े थे. आपके ईमेल मिल गई थी मुझे. थैंक यू वेरी मच. मैं आई एम ग्लैड कि सर ये हो गया. अगर कोई और दूसरा प्रश्न है एनीथिंग प्लीज सर. हाँ सर आप प्लीज. हाँ I think there is no mention of the composition of that oversight board given in the. कंपोजिशन है ही नहीं कोई. No composition. है ही नहीं. साथ में शायद कंपोजिशन किस सेंस में? वो कंपोजिशन मतलब कितने मेंबर्स सात है वो तो. सात मेंबर्स हैं. सात है ना. सात है ना.
सात मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन होगा और बाकी मेंबर्स और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से आएगा, चेयरमैन No limitation on that. हर जगह से हो सकता है। नहीं उसमें शायद है तुम्हारे पास लॉ, पढ़ लो कंपोजिशन, और उसमें ये क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि ऐसे लोग होंगे who have the relevant knowledge of audit profession, you know, Presentation में for the ये इंक्लूड होनी चाहिए। आई नो ये इसमें मगर मैं आपका ठीक। concept नहीं रखा कि नाम रियाज रहमान होगा, पार्टनर होगा फॉरवर्ड का तो मेंबर बन जाएगा, ऐसी कहानी नहीं है, not हमने at all. नहीं रखी। अदरवाइज अब तो लोग बनाते ना कि इस तरह प्रोटेक्ट करो कि ये आदमी बन जाए। We have intentionally kept it very transparent, open. Anybody on earth, including the practicing member, who has the capability of a role in that kind of field, can be member of the oversight board. Anybody. Otherwise हम बनाते हैं। इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, जाहिर है वो तो होगा ना। That's the whole question. That's what we are wrong on that. The question is, why you are saying the practicing member cannot be a member of the oversight board? Because obviously What is the problem? self-regulation concept. No, what is the problem? If how do नहीं, वो नहीं हो सकता, जाहिर है। That's where the nominating committee is. Will decide. But it is not evaluate that, and जिसका कॉन्फ्लिक्ट है वो तो नहीं हो conflict सकता तो नहीं ना। होगा यार, मेरी बात समझे। मैं अगर प्रोफेशन में हूँ या असल प्रोफेशन में फॉर आर्गुमेंट सेक, तो आर यू सेइंग कि all the partners of all firms, small and big, are not eligible to be a member of oversight board? Are you saying this? Yes. Are you saying this? Yes. Are you saying this? They will not be able to. नहीं, but I उसमें है कुछ। नहीं है ये सर, जरा नहीं है। हमने सर आप पढ़ दे दो, क्या है बताया, ऐसा कुछ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, मेरा belief होना भी नहीं चाहिए। But obviously that is where the nominating committee is. I mean, सर आप बताया, मैं पढ़ नहीं होगा। नहीं सर, नहीं होना चाहिए। आप पढ़ दे, क्या लिखा है पढ़े। 62-63 पे पूरा उतरना चाहिए, बाकी सर देखिए आप पढ़ते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हम ओवरसाइट को इंस्पेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर। लेकिन इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। ये जो लफ्ज है ना इंडिपेंडेंट, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गया है सर, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गया। पढ़ दें जरा इसको, पढ़ दें जरा, हाँ पढ़ दें, इसमें पढ़ ले जरा इसको सर, मैं पढ़ देता हूँ। नहीं सर, नहीं होना चाहिए। आई थिंक द नॉमिनेटिंग कमिटी शुड टेक केयर ऑफ इट। देखिए सर, मेरी एक मिनट में पढ़ देता हूँ, बहुत रेलेवेंट है। प्लीज, आई एम सेइंग प्लीज डू नॉट रिकमेंड एनीथिंग व्हिच विल स्पॉइल द लॉ। आई रीड इट अगेन एंड प्लीज, ये जज्बाती में नहीं करेंगे इंडिपेंडेंट, बिकॉज हम इंडिपेंडेंस के लफ्ज को भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं। द मेंबर ऑफ द चेयरमैन ऑफ OAB shall be appointed by the federal government on the recommendation of the nominating committee. Qualifications such as accountancy, business, finance, law, economics, and experience of audit, regulation of auditors, and has been on the board or director of in senior management of the public interest companies. The nominating committee shall formulate procedure. इसमें कोई बार नहीं है किसी बंदे के लिए। हाँ, लेकिन अब वो उनका राइट है। नहीं सर, क्यों करना पड़ेगा उसमें अभी नहीं डाला है। नहीं जनरल, मैं कह रहा हूँ आप लॉ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक अलग इशू है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होना, वो तो होगा ना उसका। सर इसमें नहीं डलवाए, मैं ये कह रहा हूँ। जी। That's why we have nominating committee. They'll make sure. That's what I am saying. सर अरसलान नहीं अरसलान में आपको ये करो ना, वो तो अभी उसमें भी खत्म कर दिया है ना आपने। अब क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड में भी खत्म कर दिया है कि मेंबर्स नहीं होंगे, वहां भी खत्म करना पड़ेगा। आई एग्री विद यू। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, प्लीज लॉ में ऐसी नहीं डलाएं जो आपको कल को हैम्पर करे। आपके पास नॉमिनेटिंग कमेटी है, आप उसमें रीजनेबल लोग हैं, उनको करेक्ट करें। हाँ, ये जो है ना कि ये इंडिपेंडेंस के नाम पर हम हर बंदे को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। Sir, independence, let me explain to you, and I am reiterate, say, the auditor can never be independent, audit has to be independent. Please try to understand it, कभी सोच लीजिएगा इस पे। जी। It's a matter of degree of डिग्री बात करेंगे। Nominating committee given as the balance sheet. Yeah. हाँ, वो डिसाइड करेगी ना सर, मगर इसको लॉ में नहीं डालना। Yes, any other questions? असद याद है ये पहले नहीं, एक्चुअली ओरिजिनली उन्होंने डाला था, फिर हमने कहा नहीं ये निकालें आप। कमेटी डिसाइड, देखे ना वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बोर्ड है, उसके अपने रूल्स जब बनेंगे और उसका जो फ्रेमवर्क बनेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह की पॉलिसीज वगैरह बनेगी,
तो वो उन चीजों में ये कवर हो जाएगा मेरे ख्याल में. मैं आपसे बट आई थिंक वी कांट इंक्लूड एवरीथिंग इन द लॉ. प्रैक्टिकली सवाल करता हूँ आपसे, प्रैक्टिकल सवाल करता हूँ. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हम और इंडिपेंडेंस तो बहुत लफ्ज है तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं. आई एम टॉकिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन टू. इफ देयर आर 250 people who are practicing partners, 250 or 250 to 300 people who are practicing partner in the firm, they have a right knowledge, expertise of actual auditing being conducted in Pakistan. Leaving aside the conflict of interest, if they are one of the member of the auditing board where 5 are non-practicing, their existence will be a additional benefit rather than a negative benefit. Try to understand it. ये सही है, आर्गुमेंट है शबर, उसका पॉजिटिव्स भी हैं बट परसेप्शन का इशू आ जाता है उसमें. So it's better to have a retired kind of person who is currently not practicing. Sir, retired old boys club, please. बहुत हो गई इसकी old boys. यार कुछ रिटायर्ड लोगों के लिए भी छोड़ दो ना, अब तुम्हारी भी आने वाली है रिटायरमेंट, मेरी भी आने वाली है. मैं रिटायरमेंट के बाद कुछ और करूँगा, सवाल ये नहीं है. ये देखिए, ये प्लीज इसको बहुत सोच के, ये जो एक एक लफ्ज है ना, इस पर हमने बड़ा टाइम लगाया है. ये सारी चीज सोच के कि आज के लिए नहीं है, ये 50 साल आगे के लिए है, 30 साल आगे के लिए है. नहीं रिटायर सर, आप अपनी जात पे नहीं देखें, अपनी जात पे नहीं देखें, ये जात पे देखने से बहुत प्रॉब्लम होती है. आगे जी नदीम. हाँ जी नदीम बताइए. हाँ, we had a lot of issues with respect to the definition of firms and cancellation of the firms. So that was the reason we changed the framework as well. Whereas under the new framework, there is no concept of firm itself. It's the partners who do the review. And if one or two partners have given a wrong opinion, based on that one or two partners, the whole firm will not be depart from auditing. But when you come to the penalty that you mentioned in this framework, you've gone straight to the firm. See, you've not really identified that at what point firm will be debarred, because आपने तो straight away registration उसकी registration cancel करने की बात. पेनल्टी सिस्टम है ना, ऐसा नहीं है. You see, as far as individual partners are concerned, that regulation is with the ICAP. If the oversight board or the QAB has any problem with individual partners and they are to be evaluated or disciplinary action, if you give it to the oversight board, then that will be intrusion in the powers of the ICAP. So individual members practicing, practice regulation is with the ICAP. We have not touched that. It is the firm. But the current penalty system is that either you are satisfactory rated or you are not rated. So that obviously it is very clear. We had a discussion on that it will be a graduated. Now there is fine system also. If there are any issues, they have to follow the global practices. What happens globally? I mean, a public company accounting oversight board, which is the most rigorous and most draconian law, they have never, I think, to my knowledge, deregistered firms. What they do is, they provide their recommendations in the first instance and allow the firms to improve their practices when they have findings. And then if the firms don't improve, the major thing they do is they publish their recommendations that, these are the problems with certain firms. So that is kind of a penalty that the market becomes aware that certain firms, do not have good systems. So I mean, this will be covered by the Audit Oversight Board, and they have to evolve the practices in line with the international best practices. We have not gone into details how the penalty system should work, but obviously the penalty system could be or ideally should be in this form, that initially it should be, findings. And obviously, if there are findings on certain firms, then those firms need to improve. And if they don't improve, then they will take more rigorous the next step, maybe publication of those findings or imposing fines. It is only in the extreme cases that they will do the deregistration. So because now we have a system of deregistration rather than satisfactory and non-satisfactory ratings. जी अल्ताफ. जी अल्ताफ. You have lot of connection with literature. आप अदब की बात कर रहे हैं तो ठीक है. मैं ऐसा समझता रहा कि SCCP के लिए हमारा एक ही प्रेसिडेंट काफी होगा.
यहाँ पे 3 गए और कुछ नहीं कर गए। ओके गुड। मैं ये समझ रहा तो ये था आपने कि finding फहमी थी, माफ कीजिएगा सर। ओवरसाइट बोर्ड से पहले तुमने फाइंडिंग दे दी चलिए ओके अब सर बुनियादी सवाल बेसिकली ये है कि आपने इंस्टीट्यूट ने मतलब आई एम सॉरी फॉर माय कमेंट सर, आई टेक इट बैक। Sorry. I mean, you have right to have your opinions. So you don't have to be sorry. I think, in my opinion, you have your opinion. And वो किसी ने कहा था ना वोल्टेयर ने कि I may disagree with you, but I'll defend to death your right to disagree with me. Thank you very much. So you have your उस सर मेरा बुनियादी ऑस्कोवाइल्ड कंसर्न ये उस है पे ऑस्कोवाइल्ड की एक बड़ी मशहूर कोट है, इसी को उसने दूसरे तरीके से कर दिया। उसने कहा आई मे डिसएग्री विद यू बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू मेक एन आस ऑफ योरसेल्फ। इट्स नॉट फॉर यू। सर बेसिकली बात ये है कि हमने मेरा जो ऑब्जर्वेशन इस ओवरसाइट के मुतालिक है वो ये कि एक तो काउंसिल ने पूरी मेंबरशिप को इसके बारे में अंधेरे में रखा, ठीक है, क्योंकि ये जो आप नहीं आप नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये प्रॉब्लम इतना ही बड़ा था तो ये ऐसा क्यों हुआ कि ये 2-3 माह के अंदर जो है इस तरीके से ये सारा होता है, ठीक है। तो एक तो काउंसिल ने जो है वो उसके अंदर हमारे पास हमें जो है वो हमें रिप्रेजेंट मेंबरशिप को किया। एक-एक करके सवाल करते जाओ तो बात करते जाए ना, rather than फिर आप भूल जाएंगे आपका पहला सवाल। ये सवाल तो आपको समझ गए ना। इस पे मेरा कमेंट ये है कि यहाँ पर तो यार ये ओवरसाइट बोर्ड की डिबेट जो है, जैसे मैंने कहा कि 2001 से 2002 से चल रही है, 13 साल से, और काउंसिल में भी और मेंबर्स में भी ये बातें चलती रही हैं। और जुरिस्डिक्शंस में तो प्रोफेशन से पूछा ही नहीं, लॉ पास कर दिए गए, ठीक है ना। तो मतलब ये कंपैरिजन है, ये ठीक है। मतलब ड्राफ्ट को मेंबर्स के साथ जो है शेयर नहीं किया गया। आई थिंक यू हैव अ गुड वैलिड पॉइंट, बट द थिंग इज एटलीस्ट अभी पास नहीं हुआ है एक्ट। अभी भी जैसे मैंने कहा कि इस वक्त ये कंसल्टेशन सेशंस, एक तो ये है कि काउंसिल हैज बीन डेलिब्रेटिंग